As we know that we are going to start our A2 program or A2 chapters. So the first chapter which we are doing is company accounts. In the last lecture, we have discussed about that what is company accounts, how the company accounts are going to be recorded. There are three types of statements which we use to prepare in company accounts. The first one is income statement. Income statement is prepared in the same format as we were used to prepare the income statement of other business organizations like sole trader, partnership, almost the same. Then there is a new thing which is called statement of changes in equity, which the items of which we have discussed in our last lecture also, that it includes ordinary share capital, general reserves, share premium, retained earnings. And we have discussed that. And then we used to prepare the balance sheet. So in this question, if I want to discuss with you, which is right in front of you, sales revenue is given 5,58,000, then purchases, inventory is given, which is opening inventory. Sales. The consignment account का हमारा complete हो गया ना? No, not at all. Not at all. I'm going for different lectures, as I discussed with you, that the other 2 days we will go for consignment and joint venture, and in these 2 days we will go for different chapters. So I will try to go for those chapters which are more easy in the classes, and which are more difficult, we'll go for the physical classes. So let's start it first, then we'll discuss other things also. So sales revenue is given, purchases given, inventory is opening. Sales staff salaries is an expense. Sales staff salaries is a selling expense or distribution expense, you can say. Administrative staff salaries is an admin expense. Both are used to come in the income statement under the heading of expenses. Then carriage inward is added in purchases. It is the carriage on transportation inward. It is the carriage which you have paid to bring the purchases into the factory. Administrative expenses are given. Interest on debenture 1,000 is given. Interim dividend paid is given, which will come in the statement of changes in equity. Freehold land at cost, land is not going to depreciate, so it's a non-current asset. Vehicle, office machinery and its depreciation is given. Trade receivables are given, trade payables are given, cash and cash equivalent. As I discussed with you earlier, that cash and cash equivalent means cash in hand, cash in bank, and marketable securities. All these things or anything which can be converted into cash within 3-month notice, that is known as cash and cash equivalent. Ordinary share capital is given, 5% debenture is a non-current liability. We have discussed about that. Interest on debenture we have to calculate, that is 40,000 ka 5%. General reserve and retained earnings is given. The first question is that explain the difference between right issue and bonus shares. We are yet to discuss about right shares and bonus shares, so I won't go into this, and I will go for the next part of the question, which is more important or which is more currently needed for us. I'll move into that. That is additional information. The following information is also available. Closing inventory is given, was 24,000. You know that closing inventory will be subtracted from purchases, and it will also be shown in the balance sheet in the statement of financial position. Depreciation is to be charged as follows: office machinery 10% and cost vehicle 20% on net book value. Debentures were issued on 1st April. तो ये जरा इस पर गौर करते हैं, ठीक है? Debentures are issued on 1st April. The data given in the question is basically given on ended 30th September 2017. 1st April 2017 को आपने डिबेंचर इशू किए अब्दुल्ला, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक कितने मंथ बनते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. It becomes 3 months. So it means that you have to pay interest on debenture for 3 months. So if I'm going to calculate interest on debenture, it is 40,000 into how many? What percentage of interest is given? 5% into 6/12. So it comes 1,000. 1,000 is the interest on debenture which is already paid. So no debenture interest is outstanding. No debenture interest is payable. 40,000, 5% to 6/12. 1,000 is the debenture interest which is paid. It is written under the heading of expenses, obviously, and will not be shown in the balance sheet as current liability because all of the interest is paid. Why, sir? It becomes 2,000 because we are charging interest from 1st April to 30th September. So that becomes 6 months. 40,000 into 5% into 6/12, April, May, June, July, August, and September. So any problem you have faced in this?
इसमें कोई मसला है तो बताएं, समझ आ गई है? जी जी सर, इजी जी है। जी 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 नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम। नेक्स्ट वो कहता है जी कि ऑन 30th September an additional 20,000 shares were issued at 1.2 each. These shares have not been entered in the books of accounts. आपने इन शेयर्स की एंट्री अभी तक पास नहीं की. These shares need to be entered in the books of account. What is going to be the entry for these shares? I will just do it in front of you. Bank account is going to be debited. Then share capital is going to be credited because we are issuing the shares, and share premium is also going to be credited because the shares are issued at premium. So how many shares are issued? 20,000 shares at 1.2 will be the amount which you are going to write in the bank because the shares are issued at a premium of 0.2. So the amount is 24,000 with bank. Share capital is written with par value with 20,000, I'm sorry. And the amount you are going to write, how it will become 20,000 into 1, and share premium is written 20,000 into 0.2, which is 4,000. So 20,000 will be added in the share capital account. Share premium will be added by 4,000, and bank we will add 24,000 into the bank account with for the entry of 4 for the fourth entry. So let's move forward. At 30th September, the director transferred 5,000 to general reserve. तो रिटेन अर्निंग में से ये माइनस हो जाएंगे 5,000 और जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएंगे, एंड डिसाइड टू रिकमेंड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.50 ऑन शेयर्स हेल्ड ऑन दैट डेट. द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड. जनरल रिजर्व में ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा. डिविडेंड की आप एंट्री नहीं पास करेंगे बिकॉज प्रपोज्ड डिविडेंड विल नॉट कम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट विल बी शोन एज ए फुट नोट इन अंडर द बैलेंस शीट. इट विल नॉट बी कम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. उसको हम क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. तो prepare, calculate the profit for the year, prepare statement of changes in equity, and prepare the statement of financial position. ये हमने चीजें इस क्वेश्चन में बनानी है. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. Obviously, I will start from the sales figure. So let's start doing this question. What I'm going to prepare, the first I have to prepare the income statement. So income statement is usually have 2 columns, but always remember that in the company accounts, income statement has a certain format which you have to follow in the same manner. So revenue is going to be right. I will write the revenue in front of you. The amount of revenue, let's move forward. The amount of sales revenue is 5,58,000. So I will write 5,58,000 in revenue. If there is going to be a sales return, I will write sales return. But as there is no sales return, I will write 5,58,000 in the sales revenue. Then I will subtract less sales. Cost of sales, definitely you have an idea about that. That opening inventory used to come in the first instance in cost of sales. So I'm going to write the opening inventory. And the amount of opening inventory which is given in the question. Let's see, the amount is 27,000. So I will write 27,000 over here. So the amount is 27,000 for the opening inventory. Then I will add purchases into this. So add purchases. And the amount of purchases, let's see, what is the amount of purchases? This is 3,52,000. There is no purchases return. Maybe there is something to go with that. Yes, 3,52,000 may I'm going to add carriage inward. So I will write, rather than writing the carriage inward, I will add it directly. You can do that also. Carriage inward is an amount of 4,000. I will write carriage inward. I will add carriage inward into this 4,000. So this will become 3,56,000, which is my purchases. Now I will subtract cost of sales from purchases. So less closing inventory. I'm sorry. Subtracted from this.
Let's see what is the closing inventory. Closing inventory is written under, and that is 24,000 is the amount of closing inventory. So I will write 24,000. Rather, I will subtract from this. You can go for the total first and then you can subtract. It's up to you. Or you can write it right now. ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से शो करना चाहते हैं. ये मैं इसमें से माइनस कर दूंगा. 27,000 plus 3,52,000 plus 4,000, which is the carriage inward, less closing inventory. That will become 3,59,000. So I will write 3,59,000 in the column of cost of sales. Last column. This cost of sales will be subtracted from 5,58,000. So 5,58,000 minus 3,59,000. The answer will be 1,99,000. So the answer is going to be the which is our gross profit basically. 1,99,000. Right. Now I will subtract two different expenses, which is going to be a heading like, which is known as operating expenses. So I'm right over here. Yes, operating expenses. अगर इसमें कोई accrued होते तो मैं ऐड करता, इसमें कोई प्रीपेड होते तो ऑब्वियसली मैं माइनस करता, लेकिन ना तो कुछ प्रीपेड है ना ही कोई accrued है. मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा selling expenses, and the second one which I used to write over here is admin expenses. So let's see towards the question. Selling expenses is basically given, sales staff salaries are given, which is 64,000. And there are some more things which is going to be added into sales staff salaries. So let's move forward. Sales staff salaries में कोई और चीज जो add होनी है, admin staff salaries तो खैर नहीं आनी है. तो देखते हैं हम depreciation जो vehicle की है वो sales staff salaries के अंदर आपकी add हो जाएंगी. Depreciation vehicle की दी हुई है 20% on net book value, तो वो हम निकालते हैं. देखिए vehicle हमें दिया हुआ है कितने का, cost 68,000, माइनस कर देंगे इसमें से depreciation vehicle की 18,000. जो आंसर आएगा उस पे आप ले लेंगे 20%, which becomes 10,000. So sales staff salaries I will write, selling expense means I will write 64,000, which is the expense, plus the depreciation 10,000, and I will write the total amount directly 74,000. Depreciation का add क्यों करेंगे? Add करेंगे because in the income statement the format, Abdullah, is like this. The income statement of company accounts, you don't write selling and don't write all expenses under the heading of operating expenses. All the expenses will come under two headings, which is known as selling expense and admin expense. So because vehicle is used for delivering goods to the customer, so it is going to be a distribution expense, which comes in selling expense. So I will write the selling. I will write 10,000 of depreciation under the selling expense. Same is the case with admin expenses also. The admin staff salaries of 27,000 will be added in administrative expense of 18,000, and I will write the total. So I will write the total admin staff salaries and both things, which is 27,000 plus 18,000. I will not write them separately because in company accounts there are only two expenses. One is known as distribution expense and the other is known as the total selling expense, and the total will be written admin expense 1,20,000, and I will subtract the total from the expenses from gross profit, and that is known as profit before interest and tax. It is known profit before interest and tax, and the amount is 79,000. It is profit before interest and tax. Tax is not given. Yes, interest on debenture is given, so I will subtract less interest on debenture. As I have already calculated in front of you, as discussed earlier, the interest on debenture will come only for 1,000, and the debentures are basically 40,000, and multiplied by 5% and multiplied by 6/12. Because we have used the debentures only for 6 months, the amount is 1,000. I will subtract over here, and this is going to be the answer, or you may say that we are going to have our profit.
which is 78,000. So 78,000 is the profit for the year. अगर कोई accrued expenses होते, कोई prepaid होते, तो वो भी सब हम इसी दोनों expenses में ही adjust करते. दोनों expenses में ही हमने उनको adjust करना था. We are not going to write separately anything. Here is your profit for the year. So any problem till here? Anything you want to ask, you can ask. But always remember that in companies, you need to write expenses directly under selling expense and admin expense. Now I'm going to prepare the statement of changes in equity. So anything you want to ask over till here? Any problem? Abdullah? समझ आ गई है? Hello? जी सर. सर मुझे तो आ गई. अब्दुल्ला कुछ बोले तो सही नहीं. ये अब्दुल्ला any problem? नो सर. समझ आ गई आपको? जी. Are you also writing it on your page, on your notebook? You must note it down also. जी जी सर. This is the question which we are doing. Let's see the question number and paper. That is October, November 1833. This question has come in October, November 1833, question number 4. We are solving that actually. We are solving the past paper question. Okay. Calculate the profit for the year we have done. Now prepare the statement of changes in equity. I'm going to prepare a statement of changes in equity in front of you. So here is statement of changes in equity, and we know that it has columns. I'm going to prepare those columns so that you may have an idea of how it is going to be prepared. The first column is for ordinary share capital. The first column तो basically आता है balance का. Okay. Then we used to have share premium. If any given in the question, we'll write it. Then revaluation reserve used to come, but I don't think so. Okay, revaluation reserve is given in this question, and I don't want to explain it right now because I want you to go for the format first, general reserve, and then at the end we used to have the retained earnings. Right? Let's prepare the columns of these. This is ordinary share capital column, share premium column, general reserve column, and retained earnings column. So I'll prepare it like this. ताकि जरा अच्छा लगे आपकी आंखों को. You may feel good about it. So I'm going to write the balance first. And balance is obviously taken from the question of balance. At how much amount of balance is given regarding ordinary share capital, share premium, general reserve, or retained earnings. Let's move towards the question first. So let's talk about the share capital balance. Yes, ordinary share capital balance is given. $1 share is given, which is 2 lakh. So ordinary share capital balance is given, that is 2 lakh. So I'm going to write over here the ordinary share capital balance, which is 2 lakh. Then share premium, there is no balance given. So I'll forget it. I don't write anything over there. Then general reserve and retained earning balance is given in the question. The general reserve balance is 20,000 and retained earnings, which is the profit which has come from the last year, 28,000. 20,000 का प्रॉफिट पहले से पड़ा हुआ था और 20,000 का जनरल रिजर्व पहले से पड़ा हुआ था और रिटेन अर्निंग्स जो पिछले साल से आगे ट्रांसफर हुई है वो 28,000 की पड़ी है. वो मैं लिख लूंगा. इधर आपका आ जाएगा 20,000 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 28,000. अब्दुल्ला इस यहाँ तक कोई मसला है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं. प्लीज एनीथिंग यू वांट टू आस्क आप पूछें. मैं आपका वेट कर रहा हूँ. उसके बाद नेक्स्ट जो हम लिखते हैं दैट प्रॉफिट फॉर द ईयर. Profit for the year is given in the question. That is, we have already calculated profit for the year, and that is 78,000. So I will write profit for the year 78,000 in the profit column, obviously, which has come forward from the income statement. And right over here 78,000. Now I have issue shares also. So I will write issue of share. Issue of share
I have issued 1 lakh, 1 lakh कह रहा हूँ, 20,000 shares have been issued with a premium of 4,000. इसकी एंट्री मैंने बताई थी ना आपको, 20,000 शेयर इशू किए हैं with a premium of 4,000. तो 4,000 will come in the share premium account and 20,000 से आपका शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा. If you remember, I have passed the entry for this. I have already managed the entry for this, and the entry for this is bank account debit. Share capital was credited. Share premium भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो बैंक आपका आया था 24,000 से, which we need to add obviously. Share capital 20,000 से and 4,000 was the premium. मैंने इस तरीके से इसको अपनी चेंज इन इक्विटी में अकाउंट फॉर कर लिया है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका इसमें आता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी हमने किया है. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हम देख लेते हैं कि हमने कितना केस की एंट्री पास नहीं किया आपने. तो पॉइंट नंबर 5 आप देखें, द डायरेक्टर ट्रांसफर 5,000 टू जनरल रिजर्व एंड द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड. तो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में पैसे निकालेंगे प्रॉफिट में से, यहाँ से बेटा ये माइनस हो जाएंगे. So I will go for a negative sign over here because it is subtracted from the profit. I will write in the general reserve column because general reserve has been increased by 5,000, right? So this is how I'm going to go for it. Now I will subtract interim dividend because dividend is given and that will be subtracted. Dividend you have to pay. Interim dividend I will pay from my profit, from my retained earnings column, and the interim dividend paid will come in statement of changes in equity with an amount of 4,000. 4,000 में माइनस कर दूंगा चेंजेस इन इक्विटी में से, क्योंकि डिविडेंड आप किस में से देते हैं, प्रॉफिट ऑन शेयर्स होता है. तो ये रिटेन्ड अर्निंग के कॉलम में से माइनस होगा. ये शेयर से प्रॉफिट आप दे रहे हैं तो आपका प्रॉफिट इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज हाउ आई विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर द टोटल because these totals are going to be written in the balance sheet also. So this will become 2,28,000. The ordinary share capital total will become 2,20,000. Share premium was not there in the past, but we have issued share for 4,000 premium. So 4,000 will come over here and 25,000 will come in this column. And this column I have to retain earnings column मुझे करना पड़ेगा 28,000 plus 78,000 minus 5,000 minus 4,000, and the answer will become 97,000. So this will become 97,000. So this is how we prepare statement of changes in equity. इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Any problem you want to ask me, you can ask anything. जी अब्दुल्ला रियाज, कोई मसला है तो बताएं मुझे. No sir. क्लियर है? जी सर क्लियर है. जी आपको तो क्लियर ही होगा. मैं अब्दुल्ला के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाह रहा हूँ ताकि he should feel at ease in solving these questions. क्योंकि ये कंपनी के बेसिक्स हैं. ये क्वेश्चन बेसिकली AS का समझा जा सकता है, बट इट हैज कम इन A2 आल्सो. देखो A2 का जो पेपर होता है ना, दैट इज वेरी मच एस्टेब्लिश्ड लाइक दैट. कुछ सवाल आसान देते हैं उसमें, कुछ नॉर्मल देते हैं और कुछ टफ देते हैं. ये उसका पैटर्न है पेपर का. 2 सवाल आसान होते हैं, 2 सवाल मुश्किल होते हैं, 1 सवाल टफ होता है और 1 सवाल बहुत टफ होता है. These are the changes in equity. Sorry, these are the pattern we are going to have. We are going to find while going for our paper 3. तो लास्ट में हम क्या बनाएंगे जी? उसने क्वेश्चन में कहा है आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन हम बना लेते हैं. Not that difficult. This is a balance sheet actually. Balance sheet you have prepared so many times. सर एक मिनट ऑफ चेंज जो इक्विटी विल दिखाएगा सर एक दोबारा. जी मैं दिखाता हूँ. First we have prepared the income statement. Then from income statement we have prepared the statement of changes in equity, where we have written the balance first, which is 2 lakh for share capital, general reserve 20,000 and retained earnings were 20,000. Then we have added profit for the year into it, 78,000. Then we have shares were issued of 20,000 with a premium of 4,000. शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा 20,000 से और शेयर प्रीमियम भी इंक्रीज कर जाएगा 4,000 से. देन वी हैव ट्रांसफर्ड सम अमाउंट टू जनरल रिजर्व, तो वो रिटेन अर्निंग में से माइनस कर देंगे और जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे. फिर मैंने इंटरम डिविडेंड पे किया. डिविडेंड सारे चेंजेस इन इक्विटी में ही आते हैं, लेकिन प्रपोज डिविडेंड जो रिकमेंडेड होता है वो नहीं लिखते आप. ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कहता है 33 डिविडेंड पर शेयर का.
डिविडेंड को रिकॉर्ड नहीं कहते बिकॉज इट्स ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसको डिस्कस करेंगे बाद में जब हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग चैनल्स पढ़ेंगे। इंटरम डिविडेंड वो होता है जो साल के दौरान आप पे कर देते हैं, 3 माह का, 2 माह का, 4 माह का, और वो आप प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं क्योंकि आपने वो पे कर दिए। तो टोटल कर देंगे इनका तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ यू which has obviously 2 signs, 3 signs, dollar sign, and then again for depreciation there is a dollar sign, and then again last it has a dollar sign. So first I will start from the non-balance sheet will obviously start from non-current assets. Non-current assets आपकी जो है वो आ जाएंगे like this. I will write. First of all, I'm going to write the freehold land because it has no depreciation. So I will write freehold land. Freehold land, freehold का मतलब होता है उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी और का उस पर कोई, हमने कोई उसको लीज पे नहीं दिया हुआ, कोई बुकिंग उस पर नहीं कराई हुई, कोई एसेट्स उसके तहत प्लेज नहीं हुए हुए। लीज ऑन फ्रीहोल्ड लैंड एट कॉस्ट 2,50,000 है। I will write the cost of the land. Oh, sorry, 2,50,000 in the outer column because it has no depreciation. I will write directly in the outer column. Then I'm going to write next asset, which is office machinery, vehicle. Okay, we'll go for vehicle at cost. So I'm going to write vehicle. Vehicle की डेप्रिसिएशन देखें बेटा पहले भी हुई है और मजीद भी हुई है। जो मजीद डेप्रिसिएशन हुई है वो मैंने कैलकुलेट की थी, that was 10,000, और जो पहले से डेप्रिसिएशन पड़ी है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन व्हीकल की वो है 18,000. So 18,000 plus 10,000 becomes 28,000. So I will write, I will subtract depreciation from it. The cost of vehicle is I think 68,000. And the depreciation on this vehicle is 28,000, 18,000 plus 10,000, that will become 28,000. So 68,000 minus 28,000, the answer will be 40,000. So I will write over here 40,000, which is the answer. That's it. Now I'm going to write the machinery. Machinery, the depreciation is basically calculated where the cost is. Office machinery, the cost is 10,000. I will write over here 10,000. Depreciation which has already been done on machinery, office machinery पे कितनी है 2,000, और अब कितनी हुई है, अब आपने उस पर की है office machinery पे, I don't remember, I have to see, and 2,000 is the depreciation. And let's see what is the amount of depreciation. Machinery पे depreciation में शामिल की है या नहीं की, हमने ली नहीं है ना, भूल तो नहीं गए हम। होगी डेफिनेटली जी। मशीनरी में डेप्रिसिएशन है 10% ऑन कॉस्ट, वो 10% ऑन कॉस्ट हमने निकाली थी कितने पे, 10,000 पे 10% वो आपकी आई थी 2,000, वो हमने ऐड कर दी थी, वो हम अभी डेप्रिसिएशन पीछे कितनी हुई 2,000 और 2,000 इट विल बिकम 4,000। 4,000 हम यहाँ से माइनस कर देंगे, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6,000। अब इसका टोटल कर लेंगे आप, सारी बात है। ऑफिस मशीनरी का आंसर जो है वो 7,000 आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में हमने जो डिप्रिसिएशन ऐड करनी है इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये थी 46,000 आ रही थी ना, ठीक है। 27,000 प्लस 18,000, तो दैट हैज कम, मैंने शायद थोड़ा कैलकुलेशन में गलती की है, डेप्रिसिएशन में ऐड करके मैंने लिख दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, मैंने खुद ऐड कर दी थी लेकिन ऐड यहाँ लिखी नहीं। इट इज 1,000। Why it is 1,000? Let me explain you over here. Because 10,000 is basically the depreciation on the asset, and office machinery 10,000 की है,
and the depreciation is 10%. So 10,000 का 10% कितना आ जाएगा आपका 1,000. तो 1,000 is the depreciation. वो मैंने ऐड कर दी हुई है एक्चुअली यहाँ पर, ये 46,000 ऐड करके मैंने लिया था. ठीक है जी. अब ये 1,000 वहां पे माइनस होगा. तो पहले डेप्रिसिएशन हुई हुई 3,000 की, अब कितनी हो जाएगी आपकी 4,000. 2,000 plus 1,000, that will become 3,000. So we'll write 3,000 over here, and the remaining amount is 7,000. Let's go for the total of non-current assets. 25,000 plus 40,000 and plus 7,000, that will become 2,97,000. So right over here. जरा बात समझ आएगी डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट की, दोबारा बताऊं. नहीं सर, आ गई है. अब उस वक्त मैंने बोला नहीं था, ऐड कर दी थी जल्दी में. 10,000 पर थी ना डेप्रिसिएशन, 10% वो 1,000 आती है. 1,000 मैंने फिर ऐड कर दी थी उसके अंदर. करंट एसेट्स लिखने हैं आपने. करंट एसेट्स में आपकी आ जाती हैं इन्वेंट्रीज हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेफिनेटली यू विल राइट ओवर हियर. सो वो उसने क्वेश्चन में दी हुई है हमें पहले. क्लोजिंग इन्वेंट्री वापस कितनी है 24,000 की. सो आई विल राइट 24,000 the second column, because there are two columns which are needed. Then trade receivables. ट्रेड रिसीवेबल हम देखते हैं कि कितने दिए हुए हैं सवाल में. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ट्रेड रिसीवेबल्स आर गिवन 34,000 and cash and cash equivalent is given 36,000. 34,000 and 36,000, 60,000, sorry. Cash and cash equivalent are given 36,000. Sorry, बताता हूँ. एक मिनट. Trade receivable are 34,000. Next, cash and cash equivalent. ये कितने आपके आ जाएंगे जी? ये आपको क्वेश्चन में जो है वो दिए हुए आपको कितने के 36,000 की. ठीक है, 36,000 ये हो गया, प्लस जो आपने शेयर इशू किए थे 24,000 के, वो इसमें ऐड कर देंगे आप, क्योंकि बैंक की फिगर भी तो ऐड होनी थी ना. जो शेयर आपने इशू किए थे 24,000 के, जिसमें 20,000 का आपका शेयर कैपिटल था और 4,000 का आपका शेयर प्रीमियम था, वो भी तो बैंक फिगर में ऐड होने हैं ना. 24,000, 60,000 आपके बनेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड द टोटल इज 1,18,000. 1,18,000. इसको आप ऐड कर देंगे, we'll get the amount of total assets. 4,15,000 is the amount of total assets. Now I will write the share capital and reserve section. और यू में से इक्विटी एक ही बात है, so that you may be able to know the both names. That one is share capital and reserve section. I know I have write the wrong spellings. It's fine, no matter. Ordinary share capital. देखिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो पहले से आपका पड़ा हुआ था वो 2 लाख का था, उसमें 20,000 का शेयर कैपिटल और आएगा, 2,20,000 का शेयर कैपिटल आपका आएगा, क्योंकि 20,000 के शेयर आपने मजीद इशू किए हैं. ये आपका आएगा शेयर प्रीमियम. ये मैंने आपको बात समझानी है. जो शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन है अब्दुल्ला, वो आप कैसे लिखते हैं? बड़ा आसान है. जो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बनाया है, देखिए बेटा, ये इसी को आपने कॉलम में लिख देना है, इसी को आपने रो वाइज लिख देना है. सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2,20,000 का, फिर शेयर प्रीमियम 4,000 का, फिर जनरल रिजर्व 25,000 के, और फिर रिटेन अर्निंग्स 97,000 की. जो आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में टोटल के कॉलम बनाए हैं, उनको आपने रो वाइज लिख देना है. उसी को शेयर कैपिटल रिजर्व सेक्शन का टोटल कहते हैं. आंसर कहेंगे. शेयर प्रीमियम मैंने लिख दिया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया. अब मैं क्या लिखूंगा? डेफिनेटली जनरल रिजर्व्स, वहीं से मैं उठा लूंगा अपनी चेंजेस इन इक्विटी में से. कितना जनरल रिजर्व मेरे पास? 25,000 का, और रो में लिख दूंगा इसको मैं 25,000,
और मैं क्या लिख लूंगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, और वो भी मैं रो में लिख लूंगा विच इज 97,000। इसका टोटल कर लेंगे हम, इसका टोटल आपका आ जाएगा 3,46,000। आपके आ जाएंगे जी लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी 3,46,000। फिर आपकी आ जाएगी जी नॉन करंट लायबिलिटी, तो इसको हम लिखते हैं, आगे के चलते हैं हम, we have a page to write it. Non-current liabilities. Non-current liabilities में आपके क्या दिए हुए हैं, डिबेंचर दिए हुए हैं which is 5% डिबेंचर. There can be some other also non-current liability in the question. हम वही इसको 5% debentures are given of 40,000. I will directly in the outer column. I will write directly in the outer column because इसमें कुछ ऐड नहीं होना. नेक्स्ट आपकी आ जाएंगी जी लायबिलिटीज, आप ऐड कर देंगे. सबसे पहले आपके आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स, इसमें एक्रूड एक्सपेंसेस भी आते हैं, आपको पता है. अगर वो होते तो मैं डेफिनेटली मैं लाजमी लिखता, नहीं है तो नहीं लिखूंगा मैं. ट्रेड पेबल्स आपके आ जाएंगे जो कि क्वेश्चन में दिए हुए कितने के 29,000. 29,000 आउटर कॉलम की एक ही ट्रेड पेबल्स यानी कि करंट लायबिलिटी एक ही दी हुई है आपको 29,000 पोजीशन में. इसका मैं कर लूंगा टोटल, मेरे पास ये आ जाएगा 4,15,000 इज द आंसर. मैं 9,000 भी आपको दिखा देता हूँ. देखिए क्वेश्चन में ये दिए हुए आपको ट्रेड पेबल्स 29,000, तो ये मैंने लिख लिया. दिस इज हाउ I have solved the all question. I prepared the income statement. The 78,000 profit. I have prepared the statement of change in equity, and then we have prepared the balance sheet, which is right in front of you. The share capital reserve section, non-current liabilities, and current liabilities, and the total have already come equal to 4,15,000. This is how we have solved this question. वो वाला पोर्शन हमारा नॉन करंट एसेट सेक्शन है, वो भी आपका बिल्कुल इक्वल आ रहा है, आपके सामने है. ठीक है जी. इसमें किसी को कोई मसला है अब्दुल्ला तो मुझे बताएं. एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, यू कैन आस्क द क्वेश्चन. आई एम यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. जी सर अभी तक तो नहीं. समझ आ गई आपको यानी. इसका क्वेश्चन आप कोई जी सर आ रही है, जहाँ पे नहीं आएगी मैं बताऊंगा आपको. हाँ जी. जिस जो इसमें अब आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन जो करना है इसका, वो आपने एएस की बुक में से कोई भी क्वेश्चन आप इसका सॉल्व कर सकते हैं. जो आपको इस तरह का पहले शुरू में क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन है एएस की बुक में से मैंने बोला है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. क्योंकि अगर मैं इस बुक में से मजीद क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो आपके लिए टफ हो जाएंगे. तो पहले हम एएस की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे. तो एएस का क्वेश्चन कोई भी आप लेकर सॉल्व उसको कर सकते हैं. मेरी एएस की बुक के पहले 3-4 क्वेश्चन में से कोई भी या 1-2 क्वेश्चन में से आप सॉल्व कर सकते हैं. वो आप घर में प्रैक्टिस आप उसकी कर लीजिएगा. तो हमारा लेक्चर यहीं तक जो था हमने कर लिया. इंशाल्लाह ताला सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाकी टुमारो तो मैंने आना ही है आपके पास, तो फिर इंशाल्लाह ताला इस पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. ओके देन हमजा ओके है सर. जी जी सर कल अब सेम टाइमिंग पे आएंगे. जी कल मैं इंशाल्लाह ताला आपके पास 1:10 पे पहुंच जाऊंगा. जी ठीक है.